Assalamualaikum. Cardiovascular system. Define cardiovascular system, review the anatomy and physiology, identify key cardiovascular assessment techniques, equipment used for physical exam, recognize normal cardiovascular finding, abnormal cardiovascular finding. This is our objective. So the first slide, assessment of cardiovascular assessment. What is cardiovascular assessment? Cardiovascular system consists of heart, a muscular pump, and blood vessel. Blood vessels are arranged into continuous lobes, pulmonary circulation, and systemic circulation. When the heart contracts, it pumps blood simultaneously into both lobes. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मस्कुलर हार्ट पे मुश्तमिल है और वेसल्स पे मुश्तमिल है। हार्ट से ब्लड पंप होके लंग्स की तरफ जाता है और पूरे बॉडी की तरफ जाता है। सो द नेक्स्ट cardiovascular anatomy and physiology. Heart is shaped like cone. Top of the heart is the base. Bottom is the apex. Heart size clenched fast. Pericardium area on anterior chest that covers heart and great vessels. This is the shape and size of the heart. So the next topic, this is our overview, apex, base, as shown in diagram. Not more clear, but layers of the heart. The heart is enclosed by a thick double wall, shaped like pericardium, composed of three layers: epicardium, myocardium और endocardium. हार्ट के ऊपर जो लेयर होता है उसको पेरिकार्डियम, इज अ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। यस तो हार्ट का ऊपर वाला जो लेयर है पेरिकार्डियम, और जो इसकी तीन लेयर्स है, फर्स्ट एपिकार्डियम, मिडल इज मायोकार्डियम, एंड इनसाइड ऑफ द हार्ट वो एंडोकार्डियम है। चैम्बर ऑफ द हार्ट हैज़ फोर चैम्बर्स. Upper chambers are atrium and the lower chamber is ventricles. And two sides of the heart, right side and left side. So the heart consists of four chambers: right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle, as shown in a heart diagram. The bluish part of the heart is deoxygenated blood. So and the red portion, जो सुर्ख एरिया है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग से आता है और हार्ट से एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। Walls of the heart has four walls: tricuspid wall, bicuspid wall, pulmonic wall and aortic wall. Tricuspid consists of a right side and bicuspid on left side. Pulmonic wall, when blood move from right ventricle to lungs, this wall is called pulmonic wall. And aortic wall, when left ventricle blood eject in aorta, they consist of wall. This wall is called aortic wall. In this slide you mention the mechanism of blood flow in the cardiovascular system. फर्स्ट ये जाता है कार्डियोवास्कुलर ब्लड फ्लो। लेक्चर स्टार्ट है। कार्डियोवास्कुलर ब्लड फ्लो, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपेरियर वेना क्वा तक जाता है और फिर राइट आर्टियम पे जाता है। राइट आर्टियम के थ्रू ट्रैकस्पिड तक से पास होके राइट वेंट्रिकल तक जाता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनिक वॉल क्रॉस करके पल्मोनिक आर्टरी के थ्रू लंग्स जाता है जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर वहाँ पे लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आ जाता है और लेफ्ट आर्टरियम में मेट्रियल वॉल को क्रॉस करके लेफ्ट वेंट्रिकल तक, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वॉल क्रॉस करके एओर्टा तक, और एओर्टा से पूरे बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है। Cardiovascular blood flow, there are two main: coronary artery and left coronary artery and right coronary artery. This इसमें हार्ट को ब्लड मिलने का जो वेन्स हैं इसको हम आर्टरीज कहेंगे क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है।
हार्ट को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है तो वो लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरीज हैं। कोरोनरी आर्टरीज का फ्लो मायोकार्डियल तक एंड प्राइमली ड्यूरिंग डायस्टोल when coronary vascular resistance is minimized. To maintain adequate blood flow through the coronary artery, the diastolic pressure must be at least 60. इसकी ब्लड फ्लो को मेंटेन रखने के लिए आपके साथ कम से कम 60 mmHg का बीपी होना चाहिए। कार्डियोवास्कुलर cardiac cycle. What is cardiac cycle? Cardiac cycle, contraction and relaxation of the heart is called a cardiac cycle. And also इसको हम one heartbeat भी कहते हैं या one cardiac cycle. A single cycle of cardiac activity can be divided into two basic stages. First stage इसमें systolic होता है and the second phase is diastolic. When left ventricle contract and push blood into the aorta is called systolic. The second phase diastolic when ventricular filling and relaxation. This is the diastolic phase of the heart. Cardiovascular pumping ability. Cardiac output, volume of the blood in liters ejected by the heart each minute. Adult में 4 से 7 लीटर पर मिनट हार्ट इजेक्ट करता है, आउट करता है। हार्ट रेट कितना हो, व्हाट इज हार्ट रेट? द नंबर ऑफ टाइम्स ventricles contract each minute is called heart rate. Conduction system of heart. Electrical impulse initiated with the heart are transformed along a network of specialized cells called conduction system. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कंडक्शन सिस्टम, तो ब्लड की कार्डियक साइकिल को मेंटेन रखने के लिए उसके थ्रू जो सिग्नल जाते हैं मायोकार्डियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्पेशलाइज उसके लिए जो सेल्स होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट रखने के लिए उसको कहते हैं परकंजी फाइबर्स, उसके थ्रू होता है। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट. This is the last slide of our lecture. Thank you. अभी मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? No question.